Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Picture, if you will, a swanky new campus building at Georgetown University. Oh, yeah. It's the kind of modern glass and steel architectural marvel that universally signals prestige. Right. The kind of building that makes a statement. Exactly. And within this building, there are a few premium corner offices. Naturally. These are the spaces that overlook the United States Capitol. You know, the kind of offices that broadcast status, influence, and power to anyone who walks through the door. It's basically the ultimate academic status symbol. You can easily imagine the subtle jockeying, the leveraging of tenure and publication records just to secure those few hundred square feet of premium real estate. Right. Everyone wants the corner office. Everyone wants the view. Of course. But then one man, a man who is an absolute giant in his field, someone whose credentials just eclipse almost everyone else in the building, he walks in to claim his space. Okay. And he doesn't even look at the corner offices. He doesn't ask for the view of the Capitol. He quietly walks down the hall and chooses room 778. Room 778. Yeah, which is a completely standard, nondescript, middle of the hallway space that faces a blank wall. A blank wall, when he literally could have had the Capitol. He chose the blank wall. Yeah. And that invisible, quiet choice instantly changed the behavior of everyone else in the building. Wow. Because, you know, this giant of a man took a plain middle office. It suddenly became socially impossible for any of the other senior professors to greedily claim the premium spaces. Oh, I see. Because if he didn't need the view, how could they possibly demand it? Exactly. As a result, the senior faculty quietly filtered into the standard rooms, and the junior faculty, the young, unestablished professors, well, they happily inherited those premier corner offices. That is just a stunning display of quiet leadership. I mean, it completely dismantles the expected power dynamics without a single word being spoken. It really does. And today we are looking at exactly that, how human behavior, markets, and systems completely change based on invisible dynamics, particularly when we are kept in the dark. We are spending our time today with the man who chose room 778, George Edward Alcorn Akerlof. Ah, yes. Specifically, we're exploring how one paper he wrote in 1970 explains everything from, you know, why you can't trust used cars to the modern gig economy to why society functions at all. Yeah, that paper is The Market for Lemons. Yeah. Quality Uncertainty and the Market Mechanism. That's the one. And it was published in the Quarterly Journal of Economics, which, for those outside of academia, is what we call an FT50 listed journal. Right. Highly prestigious. Very. It means it's on the Financial Times Top 50 list. Yeah. One of the absolute most prestigious platforms in the world for business and economic research. It is a foundational text, and if you are listening to this, perhaps, you know, sitting by the fire or on a quiet evening walk, we highly urge you to kindly make the time to read this thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed article for yourself. Absolutely. We have placed a link in the show notes. According to Google Scholar, it has been cited over 50,000 times, making it a landmark classic in economics and management research. It is remarkably accessible, too. But if you are new to academic research, or perhaps just about to start your own research journey, let's set the context with a very simple, jargon-free summary of what Akerlof discovered. Yeah, that would be helpful. In essence, he looked at what happens when a seller knows a lot more about a product than a buyer does. Okay. Because the buyer is in the dark and can't tell a great product from a terrible one lemon. Yep. Right? They refuse to pay top dollar. They protect themselves by only offering a low average price. Which, I mean, that makes sense from the buyer's perspective. Right. But then look at it from the perspective of an honest seller who actually has a fantastic, high-quality product. Oh, I see. That seller looks at the low price being offered and refuses to sell. They pull their great product off the market entirely. Wow. Eventually, only the bad products, the lemons, are left. The market gets worse, buyers lower their prices even further, and eventually the entire market can collapse. It's a downward spiral caused entirely by a lack of shared information. And understanding where Akerlof got the empathy to even look for this kind of market failure, well, it requires understanding his background. Yeah, absolutely. He was born on June 17, 1940, in New Haven, Connecticut, into an intellectually mobile academic family. Right. His father's research appointments meant the family had to relocate frequently, forcing him to adapt to numerous schools across places like Pittsburgh and Princeton. That kind of mobility leaves a mark. When you are constantly the new kid,
You develop a specific kind of observational skill. Yeah, you have to. You learn to watch how people interact and how systems of trust are formed because you were constantly having to navigate unfamiliar ones. That's a great point. He was also doing this navigating during a very specific historical window. He was a child of the post-Depression and World War II eras. Ah, right. The economic anxieties of that time were palpable. It wasn't just abstract theory for him, it was the lived reality of the people around him. That environment deeply shaped his early curiosity, sparking a lifelong fascination with the devastating social consequences of unemployment and financial insecurity. He wasn't looking at economics merely as a way to, maximize corporate profits. No. He viewed it through a lens of profound human empathy. He went on to earn a Bachelor of Arts from Yale University in 1962 and then moved to the Massachusetts Institute of Technology. MIT. Right. MIT in the 1960s was an incredible incubator for economic thought. Yeah. And surrounded by brilliant mentors, he solidified his analytical focus on market failures, earning his Doctor of Philosophy in Economics there in 1966. And his personal life wonderfully reflects that same devotion to these ideas. Really does. In the fall of 1977, he was in the cafeteria of the Federal Reserve and met a fellow economist named Janet Yellen. What a meeting. Right. They quickly bonded over their shared passions for social justice and solving involuntary unemployment, and they were married just months later, launching a legendary research partnership. This profound empathy defined his entire career, which was beautifully illuminated by his Georgetown colleague, Jishnu Das. The same colleague who shared the story about the corner office. Exactly. Jishnu recalled a socially distanced walk with Akerlof during the height of the COVID-19 pandemic. Akerlof looked visibly exhausted and admitted he was teaching a class at midnight. I would be exhausted too. Jishnu asked why the university would enforce such an absurd schedule on a Nobel laureate, didn't he? He did, but Akerlof quietly corrected him. The university hadn't forced him at all. Wait, really? Yeah. The class was scheduled for the daytime in the U.S., but Akerlof had 3 international students who were locked down in China. Oh, wow. Rather than forcing those 3 students to stay awake until 4 a.m. their time to attend his lecture, he had voluntarily moved his own class to midnight. He sacrificed his own well-being purely for their comfort. That is just incredible. He also possessed this rare patience for collaborative thinking. Jishnu noted that Akerlof would willingly spend hours sitting and listening to the most unpolished, ill-formed ideas of his junior colleagues. Just to help them learn how to think. Exactly. He infused the entire department with true dignity and grace. And he maintained that absolute lack of vanity until the very end. Yeah. When it was time to retire, he strictly requested that the department skip hosting any formal retirement party or farewell gathering. No party at all. None. He opted instead to slip away quietly, leaving a lasting legacy of monumental intellectual achievement and immense personal humility. Which brings us back to that monumental achievement, the 1970 paper. Right. Akerlof begins the paper with what he humbly calls a finger exercise. He uses the automobile market, specifically used cars, to illustrate this mechanism of market collapse. Yeah, the famous lemons. He's very clear that he chose cars just because they are concrete and easy to understand, a mental model to get us started. To set up this mental model, he asks us to imagine there are just 4 kinds of cars in the world. There are new cars and used cars. And within those categories, there are good cars and bad cars. The lemons. Right. So a brand new car might be great, or it might be a lemon straight off the assembly line. The same goes for used cars. Let's put ourselves in the shoes of a buyer. When I go to a dealership to buy a brand new automobile, I don't know for absolute certain if it will be a good car or a lemon. Right, it's a gamble. But I do know the general odds. I know that with a certain probability, let's call it it's a good car, and with the probability of 1 minus Q, it's a lemon. Exactly. I accept that baseline risk because every single person buying a new car is in the exact same boat. We are all equally ignorant. But here is where the critical shift in information happens. Okay, well, lay it on me. After you own that specific car for a length of time, you drive it, you maintain it, you feel how the transmission shifts, you hear the weird rattle in the engine on cold mornings. Yeah. You, the owner, form a very accurate idea of the quality of this specific machine. The uncertainty is gone for you. Okay, so I know I have a great car, but if I want to sell it to you, I can't just hand you my years of driving experience. You are still in the dark. Exactly.
An asymmetry in available information has developed. You, the seller, have significantly more knowledge about the quality of the car than I, the potential buyer, could possibly have. When I first read this, my mind immediately went to Gresham's law. Oh, sure. You know, the old economic adage from the 16th century that bad money drives out good. All right. If a government issues coins made of pure silver and coins mixed with cheap metals, people hoard the pure silver and only spend the cheap stuff. Isn't this just Gresham's law applied to Fords and Chevys? It's a very natural connection, and Akerlof addresses it directly. He says that Gresham's law has made a modified reappearance here. A modified reappearance? Yeah. The bad cars do indeed tend to drive out the good, just like bad money drives out good. But the analogy is incomplete. Wait, if the bad drives out the good in both, what makes the car market so different from the currency market? Think about the coins. In the classic Gresham's law scenario, both the buyer and the seller can usually tell the difference between the pure silver coin and the cheap metal coin. Oh, I see. The bad money drives out the good because they are legally forced by the government to exchange at the exact same rate, even though everyone knows the difference. You are forced to accept my cheap coin as $1. Ah, but with the used car, there is no government forcing the price. Exactly. The bad cars sell at the same price as good cars, specifically because the buyer is completely blind. I literally cannot tell if your car is a lemon just by looking at it in your driveway. The blindness of the buyer is the unique engine of this collapse. Because the buyer can't tell the difference, good cars and bad cars must logically sell at the exact same price in the market. Right. The buyer is only willing to pay a price that reflects the average quality of all used cars. Which means if I am the owner of a genuinely good, reliable used car, I am trapped. You really are. I know my car is better than average, but the market won't pay me for it. A used car cannot have the same valuation as a new car. Right. Because if it did, someone who realized they bought a new lemon could just sell it at the new car price, take that money, and buy another new car, giving themselves a fresh chance of getting a good one. So the market automatically discounts all used cars to account for the hidden lemons. You are financially punished for possessing a good item in a market where the buyer is blind. Yeah. Your rational response is to refuse to sell. You keep the good car. To really drive home how severe this spiral is, Akerlof introduces a mathematical example using utility theory. He does, yeah. I want to make sure we don't lose anyone here, so let's walk through this narrative step by step. Sounds good. He strips away all the real-world noise and asks us to imagine a perfectly simplified scenario with two groups of traders, Group 1 and Group 2. Okay, so in this stripped-down world, Group 1 currently owns all the cars. Mm-hmm. And let's assume the quality of these cars is distributed completely evenly. Some are terrible, some are amazing, and there's everything in between. No. Group 1 values these cars at a normal baseline rate. Then we have Group 2. Group 2 currently has no cars at all, but they want them. Badly. In fact, we assume mathematically that Group 2 values every single car 50% more than Group 1 does. Okay. If a car provides $1,000 of utility to a Group 1 owner, it would provide $1,500 of utility to a Group 2 buyer. Now, if we were operating under traditional economic models, this is a dream scenario. Totally. You have willing sellers, and you have highly motivated buyers who value the asset significantly more than the sellers do. Trade should happen instantly. Mm-hmm. Everyone should walk away wealthier in terms of utility. But Akerlof injects the blindness. Right. Group 2 cannot see the individual quality of the cars. They only know the average quality of what is being offered at any given price. Let's play this out. Let's say the absolute best car in the world is worth $3,000 to Group 1, and the worst is worth $0. So the true average is $1,500. Yep. Group 2 values that average at 50% more, so they are willing to pay $2,250 for an average car. So Group 2 offers $2,250. But what does the person in Group 1 who owns the pristine $3,000 car do? They hold on to it. Right. They look at the offer of $2,250 and say, no way, my car's worth $3,000 to me. So they pull their car from the market. Wait, if all the people with cars worth more than $2,250 pull their cars out? The best cars are suddenly gone. Wow. And what does that do to the average quality of the cars remaining in the pool? The average plummets. Right. Because the top tier is gone, the new average of the remaining cars isn't $1,500 anymore. It's much lower. Let's say the new average is $1,000. Group 2 is blind to individual cars, but they aren't stupid. They see that the top cars have vanished and the average quality has fallen, so they recalculate. Okay. If the new average is $1,000 to Group 1,
Group 2 is willing to pay their 50% premium, Yeah. $1,500. But when Group 2 drops their offer to $1,500, the next tier of good car owners, the people with cars worth $2,000, look at the new offer, realize it's too low, and pull their cars from the market. Which drops the average quality even further. Yeah. Group 2 lowers their price again. The next tier of sellers leaves. It's a complete death spiral. It really is. Even though Group 2 values the cars a full 50% more than Group 1, as the price falls, the average quality falls so rapidly that the market completely evaporates. Akerlof mathematically proves that no trade takes place at any price level whatsoever. The market ceases to exist. It is a profound realization. And, if this just applied to used cars, we could shrug it off as a minor inconvenience. But Akerlof takes this foundational mechanism and turns it towards something vital. What happens when the lemon isn't a faulty transmission, but human health? That is such a huge leap. Think about the last time you shopped for health insurance or watched your premiums spike. Yeah. This is where the paper moves from a neat theoretical model into profound social reality. He transitions to the medical insurance market, specifically looking at the realities of the time for people over the age of 65. He highlights a well-known fact from the 50s and 60s. Older people had incredible difficulty buying medical insurance on the open market. Now, the intuitive pushback to this fact is simple. Right. Why not just charge more? Exactly. If older people are a higher medical risk, why don't insurance companies just raise the price of the premiums to match that risk? If it costs more to care for them, charge them more. It seems like a logical, standard market solution. But Akerlof unpacks why that fails, introducing the concept of adverse selection, which operates exactly like the Lemons principle. If an insurance company raises the price of the policy significantly, who is going to actually buy it? Only the people who know they're going to need it. Right. The healthy 65-year-olds, the ones who know they exercise, eat well, and have great family histories, look at the high premium and say, that's too expensive. I'm not going to spend that much when I feel fine. Yeah. So they drop their coverage. So the only people willing to pay the higher premium are the people who are increasingly certain they will incur major medical bills. The asymmetry here is the key. Just like the car owner knows the car's weird rattle better than the buyer, the patient knows their body better than the insurance company. Exactly. Akerlof points out that errors in medical checkups or simply a doctor's natural sympathy with an older patient make it much easier for the applicant to assess their true risks than for the distant, bureaucratic insurance company. So as the price rises, the healthy people leave, and the average medical condition of the insurance pool deteriorates. The insurance company is left with an undue proportion of what the industry coldly calls below average risks. Below average risks. Yeah. If they raise the price again to cover these new concentrated costs, even more of the relatively healthy people drop out. It's the used car spiral all over again, but with human lives. Eventually, the pool is so sick and the required premiums are so astronomical that no insurance can be sold at any price. And Akerlof grounds this in stark data, citing a 1956 national sample survey of 2,809 families, which covered nearly 9,000 individuals. Wow, large sample. The numbers are incredibly revealing. For people aged 45 to 54, hospital insurance coverage was at 63%. But for those over 65, coverage plummeted to just 31%. That is a massive drop-off just based on age. But, there is a detail in that financial data that I want to explore because it proves his point perfectly. Oh, yeah. The survey found that the average medical expenses for males aged 55 to 64 was $88. But for males over 65, the average expense actually fell to $77. Now that seems entirely backwards. Why would older men spend less on healthcare? Right. It wasn't because they were magically getting healthier. Obviously not. The data showed that for non-insured men, out-of-pocket expenditures rose with age, just as you'd expect, from $66 to $80. Okay. But for insured men, the expenditures declined massively, from $105 down to $70. Wow. Why the drop for the insured group? Akerlof draws the compelling conclusion that insurance companies were actively looking at the older population, seeing the risk of the lemon spiral, and becoming particularly wary of offering robust medical insurance to older people at all. Yeah. They were tightly restricting coverage, placing caps on payouts, or outright denying policies. Which means the private market mathematically engineered the most vulnerable people out of the safety net. It's tragic.
This observation leads Akerlof to a powerful conclusion regarding public policy. Remember, this was written not long after the creation of Medicare in the United States, and he provides a definitive economic justification for it. He argues that on a pure cost-benefit basis, Medicare pays off. Oh, interesting. It is quite possible that every single older individual in the market would be willing to pay the expected average cost of their medical care to buy insurance. Yeah. But because of the adverse selection trap, the terror of attracting too many lemons, no private insurance company can afford to sell them a policy at that average price. So Akerlof states that the welfare economics of Medicare are exactly analogous to the classroom arguments for building public roads. That's a great analogy. A private market cannot efficiently provide a public road without creating endless toll bottlenecks that ruin its utility, right? So the government steps in and builds it for the welfare of all. Similarly, the private market cannot provide health insurance for the elderly without collapsing under adverse selection. Right. Government intervention compulsory participation through a program like Medicare is mathematically necessary to solve the information asymmetry. Because everyone is in the same pool. Exactly. When everyone is forced into the pool, the healthy balance out the sick, the spiral is broken, and the welfare of all parties is increased. He really takes a heated political topic and cools it down into a structural mathematical reality. He does. But if the loss of healthcare is a tragedy, how does this mathematical uncertainty affect our ability to even earn a living in the first place? From insurance, he guides us into the labor market. This is where the paper enters incredibly sensitive territory, but does so with rigorous objectivity. Yeah. Akerlof applies the Lemons principle to the employment of minority groups. He notes the reality that employers sometimes refuse to hire members of minority groups for certain types of responsible jobs. This feels like a very heavy topic. Usually when we see an employer refusing to hire someone based on their race, we immediately, and often correctly, identify it as irrational prejudice or blatant racism. Right. How does Akerlof view it through the lens of information asymmetry? He introduces a controversial structural economic perspective. He points out that this decision may not always reflect irrational prejudice, but rather a cold, calculating attempt at profit maximization in a state of profound ignorance. Ignorance of what? When an employer is looking at a new applicant, they face a severe information asymmetry. Okay. They don't know this person's true capabilities, their work ethic, their resilience, or their underlying talent. They are blind. Right. So in the absence of perfect information, employers rely on what Akerlof calls a market statistic. Let me make sure I grasp this. Because they can't see the individual's true quality, they use race or gender or class as a crude proxy statistic to guess at the applicant's social background, quality of schooling, and general job capabilities. Exactly. They are judging the individual by the perceived average quality of the group. Yes. It is the exact same mechanism as the used car buyer, assuming every car is a lemon, so they only offer the average price. The employer assumes the applicant is average for their demographic, and if the employer perceives the demographics average to be low due to systemic historical disadvantages, the individual is penalized. And this creates a devastating cycle. It does. To break this cycle, the employer needs better individualized information. Akerlof introduces the primary remedy society has built for this: good quality schooling. Schooling is supposed to be the great equalizer. By grading students, testing them, and evaluating them over time, the schooling system acts as a certifying agency. Right. It can give an employer a much better, highly individualized indicator of quality than superficial characteristics like race. He quotes the economist T.W. Schultz here, a quote that is both beautiful and tragic. Oh, I love this quote. Schultz wrote, "The educational establishment discovers and cultivates potential talent. The capabilities of children and mature students can never be known until found and cultivated." Let's just sit with that thought for a moment. An untrained worker might have immense, incredibly valuable natural talents, but in a market defined by information asymmetry, those talents are invisible. They really are. They must be certified by the educational establishment before a company can afford to take a risk and utilize them. But what happens when that certifying establishment itself is broken? Yeah. Akerlof points directly to the unreliability of slum schools or underfunded schools in disadvantaged areas. If the school a minority student attends is deemed unreliable or subpar by the broader market, then that certification is worthless.
it completely fails its purpose. The individual is punished not for their lack of talent, but for the lack of credibility of their certifier. It is a heartbreaking reality. Yeah. Akerlof highlights a quote from George Stigler to emphasize this immense loss of human potential. Yeah. Stigler wrote that in a regime of ignorance, Enrico Fermi would have been a gardener, von Neumann, a checkout clerk at a drugstore. Enrico Fermi and John von Neumann were two of the most brilliant physicists and mathematicians of the 20th century. Right. But without a credible system to signal their quality to the market, their genius would have been completely invisible. They would have been treated as lemons in the labor market. This leads Akerlof to a crucial insight about public policy programs. He specifically mentions the Office of Economic Opportunity, or OEO, which was evaluating its job training programs using cost-benefit analysis at the time. Okay. Akerlof warns that analyzing these programs by only looking at the individual trainee misses the true economic reality of the market statistic. Why does individual training miss the point? If I take one person from a disadvantaged background and train them, haven't I improved their chances? You have, but because of the lemons principle, the employer is still looking at the group statistic. Oh. The employer still can't easily verify the individual's new skills. The profound insight here is that the rewards for improving education or offering job training in disadvantaged areas tend to accrue to the group as a whole. I see. When you train a minority worker, you aren't just increasing their individual skills. You are incrementally raising the average quality of the entire group's market statistic. You are changing the probability variable, the Q we talked about with the cars, in the minds of employers for everyone in that demographic. The benefit is largely external to the individual. It helps break the statistical prejudice for everyone in that group. Wow. If cost-benefit analyses don't account for this broad group-level return on investment, they will vastly underestimate the true economic value of these social programs. It is a brilliant way of mathematically proving that rising tides actually do lift all boats, provided the market recognizes the tide is coming in. That's a great way to put it. But if the labor market relies so heavily on trust, statistics, and credible certification, what happens when that trust is deliberately broken? What happens when dishonesty enters the system? Akerlof moves from the structural failures of information to the malicious exploitation of it. He examines the devastating economic costs of dishonesty. He asks us to consider a market where goods can be sold honestly, or they can be misrepresented. The purchaser's whole problem is trying to identify the true quality. Right. And here is a profound realization from the paper. The true cost of a cheat, a dishonest seller, is not just the amount of money they steal from the person they directly cheated. That is just the micro-level loss. The macro-level cost of dishonesty is that the presence of people willing to offer inferior goods disguised as good ones drives legitimate business completely out of existence. It is the lemons principle weaponized. Akerlof quantifies this conceptually. He notes that if a seller misrepresents the quality of an automobile, it might cost the buyer a fractional unit of utility. But the secondary effect is that it reduces the size of the entire used car market from a thriving market down to zero. Yeah. The legitimate sellers of good wares are driven out because the buyers can no longer trust anything they see. To see this in practice, Akerlof turns his attention to developing economies, noting that business in underdeveloped countries is notoriously difficult. He does. He suggests that this difficulty is largely a structural problem of extreme quality variation and the resulting lack of trust. He brings in some fascinating real-world examples to ground us. He looks at India in the 1960s. Okay. He points out that the need for government intervention to guarantee quality is a major indicator of this problem. For example, under the Indian Export Quality Control and Inspection Act of 1963, about 85% of all Indian exports had to be covered by some form of strict quality control. They had to legally force quality verification because the international market simply wouldn't trust the goods otherwise. Exactly. The asymmetry was too high. He also uses a very domestic, evocative example from the local Indian bazaars. This one stuck with me. He describes how Indian housewives at the time had to carefully glean the rice they bought in the local market. Yeah. They had to sit down and sift through the rice by hand, grain by grain, to sort out small stones of the exact same color and shape that had been intentionally added by dishonest sellers to increase the weight of the grain. Imagine the friction that introduces into an economy. It's massive. The time and energy spent sifting out stones is a massive deadweight loss. It's a perfect, tangible example of the macro cost of dishonesty.
Akerlof contrasts this heterogeneity of quality in a street market with the standardized, reliable qualities of an American supermarket. Right. The quality variation, and thus the uncertainty, was simply a much greater problem in the East than in the West at that time. And this lack of trust forces the economy to adapt in ways that actually stunt its overall development. How so? Because spotting true quality is so difficult, the people who are naturally good at it, the people who can look at a product and guarantee it isn't a lemon, they become incredibly valuable. In many traditional patterns of development, these merchants become the very first entrepreneurs. Akerlof cites Japan as the best documented case of this, but notes it likely happened in Britain and America as well. Right. The merchant who can identify a good used car or good rice, buy it from a skeptical seller, and then guarantee its quality to a skeptical buyer can capture a massive profit margin. But here is the tragedy that Akerlof points out. Entrepreneurship, true innovation, is an incredibly scarce resource in any developing economy. We need brilliant minds to build new things, to invent, to streamline production. Exactly. But because the information asymmetry is so bad, the payoff for merely trading and verifying existing goods is astronomical. So the would-be entrepreneurs, the brightest minds of a generation, are diverted away from producing new wealth. Right. And instead, they spend their lives just acting as human trust filters for existing goods. Furthermore, the amount of entrepreneurial time required per unit of output is massively inflated by the need to constantly check for quality variations. The economy gets bogged down in verification instead of creation. Which leads perfectly into his analysis of credit markets in these underdeveloped regions. Oh, this part is fascinating. If you are going to build a business, you need a loan. But the credit markets operate under the exact same lemons principle. Akerlof asks a seemingly simple question that reveals a massive paradox. Why does a local village moneylender in India charge extortionate interest rates? 15%, 25%, or even 50%? While the large central banks in the cities have prime interest rates of just 6 to 10%. If you are an economist, you look at that and say, why wouldn't a middleman just borrow from the central bank at 6% and lend to the village at 10%, undercutting the local moneylender and making a profit? It seems like an arbitrage opportunity waiting to happen. But the answer, of course, is information asymmetry. Exactly. The central bank, or the theoretical middleman, doesn't know the true character or the reliability of the local borrower. They don't know who is a good risk and who is a lemon. If the central bank tries to lend in that village, they will attract all the lemons, the borrowers who have no intention or no ability to repay. Right. Akerlof mentions a profitable sideline of cotton ginning companies in Iran at the time. They had lines of credit from banks in Tehran. They tried loaning money to local farmers for the next season. And what happened? In the first years of operation, they expected massive losses from unpaid debts, simply due to their poor knowledge of the local scene. So how does the local moneylender survive, let alone charge 50%? Because the local lender has the one thing the central bank lacks: intimate, personal knowledge. They have solved the information asymmetry through proximity. Akerlof quotes the historian Sir Malcolm Darling, who was a leading authority on the Punjabi peasant. Oh, yes. Darling wrote that the village moneylender is always accessible, dispenses with troublesome formalities, and keeps in close personal touch with his clients. Right. And this is the crucial part of the quote. In many villages, shares their occasions of weal or woe. With his intimate knowledge of those around him, he is able, without serious risk, to finance those who would otherwise get no loan at all. Intimate knowledge. That is the antidote to the lemons principle. Really is. Akerlof includes another beautiful quote from Barbara Ward, recounting a conversation with a small shopkeeper in a Hong Kong fishing village. The shopkeeper said, "I give credit to anyone who anchors regularly in our bay, but if it is someone I don't know well, then I think twice about it unless I can find out all about him." You anchor in the bay. I see you every day. I know your habits. I know your family. The asymmetry is gone. Exactly. But because only the local moneylender possesses this intimate knowledge, they hold a monopoly on credit in that village. They can charge 50% interest because the borrower has no other options. The central bank can't compete without the knowledge. Akerlof also points out how this played out on a larger industrial scale in India, with the managing agency system. Okay. These agencies were merchant houses that promoters would turn to when starting a new venture.
like a plantation or a factory. They turned to the agency because of its established reputation, which encouraged confidence and stimulated investment. And significantly, these managing agencies were dominated by specific communal or caste groups. In an environment where outside investors were terrified of being bilked, terrified of buying a corporate lemon firms, established a reputation for honest dealing by relying on communal ties. The shared communal background acted as a guarantee of honesty within the community. It limited the sources of finance, but it allowed trade to happen where it otherwise would have collapsed. Yeah. And because they established this trust, they were able to extract a monopoly rent for their services. Trust, in a world of lemons, becomes a highly lucrative commodity. But if trust is this fragile, and if markets naturally collapse under uncertainty, it raises a massive question. How does the modern world function at all? How do we ever buy a house, or a used car, or even a hamburger without paralyzing fear? This is where Akerlof's brilliance truly shines. We don't just accept the collapse. Human society has organically engineered solutions. Yeah. He calmly lists the brilliant counteracting institutions that we have built to fight back against the lemons principle. The first and most obvious institution is the guarantee. Exactly. When you buy a consumer durable, like a toaster or a car, it almost always comes with a guarantee or a warranty. Right. What does that do? It takes the risk of quality, uncertainty, the fear of the lemon, and shifts it away from the buyer, back onto the seller. I see. The seller is essentially saying, I know you can't see the true quality of this item, so I will legally bind myself to fix it if I am lying. It equalizes the risk. A second massive institution society relies on is the concept of a brand name. Oh, definitely. We often think of brand names as just marketing fluff or status symbols, but Akerlof views them as essential economic tools. A brand name does two things. First, it indicates a promised baseline of quality. But more importantly, it gives the consumer a means of retaliation if that quality is not met. Retaliation. I love that framing. Yeah. If I buy a product from a known brand and it's a lemon, I will curtail all future purchases from that brand. The brand has something to lose its reputation. This ensures the prospective consumer that the company is highly motivated to maintain quality. And Akerlof highlights a fascinating observation consistent with this approach: the chain restaurant. I have always wondered about this. Why do you see identical fast food chain restaurants at every single interurban highway exit, but rarely in the quaint center of a local town? Think about the information asymmetry. If you are a local living in a town, you don't necessarily eat at the highway chain restaurant. No, you don't. You know the area. You know which local diner has the best pie, which one has the cleanest kitchen. You have localized, intimate knowledge, just like the village moneylender. But imagine I am a traveler driving on that highway. Right. I pull into a town I have never seen before. I am completely blind to the local quality. Right. If I pick a random local restaurant, I run a high risk of getting a culinary lemon. So the chain restaurant sits on the highway, offering a solution to your information asymmetry. The chain might not offer the absolute best food in town, but it offers a guaranteed, standardized, better than average hamburger. It protects the blind traveler from the risk of the local lemon. The brand name is a beacon of minimum acceptable quality in a sea of unknown risks. It is such a simple, perfect explanation for the geography of American fast food. Another major defense mechanism society uses is licensing and certification. We talked earlier about the tragic lack of certification for minority workers in slum schools, but look at how society relies on it everywhere else. We require doctors, lawyers, and even barbers to be licensed. When I walk into a doctor's office, I am at a massive information disadvantage. You really are. I have no idea if they actually understand my symptoms or if they are just guessing. Oh. The medical license on the wall is a third-party certification indicating they have attained a specific level of proficiency. Educational degrees serve the exact same function in the broader labor market. The high school diploma, the baccalaureate degree, the PhD, they're all institutional mechanisms to reduce quality uncertainty for employers. The universities themselves become the brand names. And Akerlof even chuckles quietly at the academic world itself in the paper. He points out that even the Nobel Prize, which he himself would go on to win 3 decades after publishing this paper, is essentially just a brand name. That's pretty funny. It's a mechanism to certify quality in a sea of academic noise, helping the world identify which ideas are truly not lemons. It's a beautifully self-aware observation. To bring all this together, Akerlof concludes his paper by stepping back and summarizing the core theoretical shift his work represents. Right.
I need some help here, though, because he contrasts his findings with traditional models, specifically mentioning the Arrow-Debreu model. For me and the listener who might be a bit rusty on our mid-century economic models, what exactly did that assume, and how did Akerlof break it? The Arrow-Debreu model is a cornerstone of general equilibrium theory. It's a highly mathematical model that basically proves that under certain conditions, free markets will efficiently allocate resources to their most productive uses. But to make the math work, Arrow and Debreu had to assume a few things. Most notably, they assumed perfect information. They modeled markets as if everyone knew everything about everything. As if I could look at your used car and instantly know the exact wear and tear on the brake pads? Yes. But Akerlof showed that perfect information is a fantasy. He demonstrated that informal, unwritten guarantees of trust are the actual mandatory preconditions for trade and production. Yeah. Where these guarantees are indefinite or absent, business will suffer and markets will collapse, as indicated by his generalized Gresham's law. He acknowledges that this aspect of uncertainty had been explored by game theorists like in the classic Prisoner's Dilemma, but it hadn't been fully incorporated into traditional macroeconomic models. Right. He proved that the difficulty of distinguishing good quality from bad is inherent in the business world, and it is the invisible force shaping the institutions around us. So what are the key takeaways for those listening today? If you are an academic or a researcher, the lesson is stark. You simply cannot model human behavior or economic systems without rigorously accounting for what people don't know. Yeah. The asymmetry is often more powerful than the product itself. And if you are a practitioner, a business owner, or a manager, the takeaway is deeply practical. Protecting your brand reputation, offering strong warranties, and ensuring transparent communication isn't just a soft marketing tactic. No. It is the mathematical lifeblood of your business. It is the structural engineering that prevents your specific market from collapsing into a pile of lemons. It makes you wonder about the future horizons of this research. The paper was written in 1970 about used cars and rural credit markets. Yeah. But the lemons principle feels more urgent today than ever. Oh, absolutely. Think about the modern gig economy. Platforms like Uber or Upwork are essentially massive, algorithmically driven trust engines. They really are. They use rating systems, 5 stars, written reviews, to instantly solve the information asymmetry between a stranger getting into a car and the driver, or a company hiring a freelance coder halfway across the world. They have digitized the intimate knowledge of the village moneylender. And what about artificial intelligence? Oh, man. This is the ultimate contemporary application. If generative AI floods the internet with billions of articles, images, and code snippets of highly uncertain quality, the information asymmetry between creator and consumer is going to explode. It's terrifying. Will human writers and artists producing high quality but slower work be driven out of the market entirely, just like the good used cars? That is the exact question Akerlof's framework forces us to ask. Unless we develop new, robust counteracting institutions, new ways to certify human authenticity or verify the quality of AI output, we risk a massive lemon-induced collapse of the digital information market. Yes, a profound challenge. But as we close our time together, I want to bring the conversation full circle. We started by looking at George Akerlof, the man, sitting in room 778, avoiding the corner office. Yeah. We talked about his humility, and that story Jishnu shared about him willingly sitting for hours listening to the unpolished, ill-formed ideas of his junior colleagues. The ideas that others might have quickly dismissed as academic lemons. If the world is naturally full of uncertainty, and if it is mathematically so difficult to tell a lemon from a genuinely good idea at first glance, perhaps Akerlof's greatest lesson wasn't just the mathematical model he built. No. By sitting patiently in those meetings, listening past the stuttering starts and the half-baked theories, he was actively fighting the asymmetry. He was. He was doing the hard, deeply human work of finding the hidden underlying value that a rushed, perfectly efficient open market would have discarded. It is a quiet reminder for you, the listener, as you move through your own professional and personal life. When faced with uncertainty, when tempted to write someone or something off as a lemon, well, perhaps the most revolutionary thing you can do is pause, look patiently past the surface, and do the work to find the value hidden underneath. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting.
রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পাভলভ। আর আমি নিকিতা। কোভিড-19 মহামারীর সময়কার কথা। চারদিকে একটা অদ্ভুত স্থবিরতা, লকডাউন চলছে পুরো পৃথিবীতে। তো সেই সময় জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জিষ্ণু দাস মাঝরাতে একটু হাঁটতে বেরিয়েছেন। ওই রাতের বেলার নিস্তব্ধতার মধ্যে। হ্যাঁ, একদম। তো হঠাৎ ক্যাম্পাসের রাস্তায় তার এক সহকর্মীর সাথে দেখা। মানুষটিকে দেখে ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল, মানে চেহারায় অবসাদের ছাপটা একদম স্পষ্ট। তো কারণ জানতে চাইলে সেই সহকর্মী জানালেন তিনি মাঝরাতে ক্লাস নিচ্ছেন। মাঝরাতে ক্লাস? মানে বিশ্ববিদ্যালয়ে তো দিনের বেলায় ক্লাসের সময় ঠিক করে দেয়, তাই না? ঠিক এটাই জিষ্ণু দাসও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তো ওই সহকর্মী অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন যে তার 3 জন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী তখন চীনে আটকা পড়েছিল, আর সেখানে তখন কঠোর লকডাউন চলছিল। ও আচ্ছা, তার মানে টাইমের একটা বড় পার্থক্য ছিল। একদম তাই। দিনের বেলায় ক্লাস নিলে ওই 3 শিক্ষার্থীকে ভোর 4টে পর্যন্ত জেগে থাকতে হতো। শুধু তাদের যেন এই কষ্টটা না হয় তাই তিনি সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে ক্লাস মাঝরাতে নিয়ে গেছেন। বাহ, ভীষণ সহানুভূতিশীল একটা কাজ। আর এই চরম সহানুভূতিশীল এবং বিনয়ী মানুষটি আর কেউ নন 2001 সালের নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জর্জ এডওয়ার্ড আকেরলফ। সত্যি বলতে কি, এটা একটা অসাধারণ গল্প। মানে এমন একজন মানুষ যিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতির চূড়ায় বসে আছেন, অথচ ছাত্রদের প্রতি তার এই মমত্ববোধ প্রমাণ করে তিনি শেকড় থেকে কতটা যুক্ত। হ্যাঁ, আর তার এই গভীর মানবিক বোধ কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি, তাই না? একদমই না। 1940 সালে তার জন্ম। ছোটবেলা থেকেই বাবার গবেষণার চাকরির কারণে তাকে এক শহর থেকে আরেক শহরে, মানে ধরুন এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে বদলি হতে হতো। হ্যাঁ, পিটসবার্গ, প্রিন্সটন এসব জায়গায় বারবার স্কুল পাল্টাতে হয়েছে তাকে। ঠিক। তবে তার চিন্তা জগতে সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলেছিল সেই সময়কার সমাজ। মহামন্দা বা পোস্ট ডিপ্রেশন আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার যে একটা অর্থনৈতিক উদ্বেগ ছিল, মানুষের বেকারত্ব, আর্থিক অস্থিরতা, এসব তার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। মানে অর্থনীতি যে শুধু কিছু গাণিতিক হিসাব নয়, এর সাথে মানুষের জীবন জড়িয়ে আছে, এই বোধটা তার ভেতরে খুব আগে থেকেই ছিল। একদম তাই। আর এই বোধ থেকে তিনি গবেষণা শুরু করেন। ইয়েল থেকে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট করে 1966 সালে MIT থেকে PhD শেষ করেন। তিনি মার্কেট ফেলিয়ার নিয়ে কাজ করতে ভীষণ আগ্রহী ছিলেন। আর মজার ব্যাপার হলো তার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সম্পর্কটিও কিন্তু তৈরি হয়েছিল এই সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতি টান থেকে। আপনি জ্যানেট ইয়েলেনের কথা বলছেন তো? হ্যাঁ, 70 দশকের শেষের দিকে 1977 সালে ফেডারাল রিজার্ভের ক্যাফেটেরিয়াতে আর এক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জ্যানেট ইয়েলেনের সাথে তার পরিচয় হয়। হ্যাঁ, বেকারত্ব আর অর্থনীতির নানা বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলতে তাদের মধ্যে দারুণ একটা বুদ্ধিবৃত্তিক সংযোগ তৈরি হয়। পরিচয় থেকে প্রেম এবং কয়েক মাসের মধ্যেই বিয়ে। সত্যি, তারা একে অপরের গবেষণার কিংবদন্তি তুল্য অংশীদার হয়ে ওঠেন। আর ব্যক্তিগত জীবনে জর্জ আকেরলফ কতটা নিভৃতচারী ছিলেন সেটা জিষ্ণু দাসের বর্ণনায় দারুণভাবে উঠে আসে। হ্যাঁ, ওই রুম পরিবর্তনের গল্পটা, তাই তো? একদম। ক্যাম্পাসের নতুন ভবনে যখন ফ্যাকাল্টিদের শিফট করা হচ্ছিল, তখন US ক্যাপিটাল বিল্ডিংয়ের দিকে মুখ করা চমৎকার প্রিমিয়াম কর্নার অফিসগুলো বরাদ্দ হচ্ছিল। মানে একজন নোবেল বিজয়ী হিসেবে তিনি তো চাইলেই সবচেয়ে বিলাসবহুল রুমটি নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে বেছে নিলেন রুম 778। মানে অত্যন্ত সাধারণ দেওয়ালমুখী একটা রুম। আর এর পেছনের কারণটা ভাবলে অবাক হতে হয়। কারণ একজন নোবেল বিজয়ী যখন সাধারণ রুম বেছে নিলেন, তখন অন্য সিনিয়র প্রফেসরদের পক্ষেও আর লোভ করে কর্নার রুমগুলো দাবি করা সামাজিকভাবে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। রাইট। ফলে সিনিয়ররা সাধারণ রুম নিলেন আর জুনিয়র ফ্যাকাল্টিরা পেয়ে গেল সবচেয়ে ভালো কর্নার অফিসগুলো। সত্যি অসাধারণ একটা ব্যাপার। শুধু তাই নয়, উনি অন্যের একদম অগোছালো কাঁচা ধারণাও ঘন্টার পর ঘন্টা ধৈর্য ধরে শুনতেন, শুধু তাদের চিন্তার পদ্ধতিটা শেখানোর জন্য। হ্যাঁ, আর নিজের অবসরের সময় কোনো আনুষ্ঠানিক বিদায় সংবর্ধনাও তিনি নিতে চাননি। মানে একদম নীরবে নিভৃতে বিদায় নিয়েছিলেন তিনি। অথচ এই নিভৃতচারী মানুষটিই কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিকে একটা নতুন পথ দেখিয়েছেন তার যুগান্তকারী গবেষণা দিয়ে। বিশেষ করে 1970 সালে প্রকাশিত তার সেই পেপারটি, যা পুরো বাজার ব্যবস্থার হিসাব নিকাশ পাল্টে দিয়েছিল। ঠিক বলেছেন।
তো আজকের আলোচনায় আমরা তার সেই ল্যান্ডমার্ক গবেষণাটি নিয়েই কথা বলবো। পেপারটির নাম হলো দ্য মার্কেট ফর লেমনস। হ্যাঁ, দ্য মার্কেট ফর লেমনস। এটি অর্থনীতি ও ম্যানেজমেন্ট গবেষণার অত্যন্ত সম্মানজনক একটি জার্নাল, কোয়ার্টারলি জার্নাল অফ ইকোনমিক্সে প্রকাশিত হয়েছে, যা একটি FT50 তালিকাভুক্ত জার্নাল। আর এর ইম্প্যাক্ট তো বিশাল। গুগল স্কলারের তথ্য অনুযায়ী এটি 50,000-এরও বেশি বার সাইট বা উদ্ধৃত করা হয়েছে। হ্যাঁ, একাডেমিক গবেষণার জগতে যারা নতুন পা রাখছেন তাদের জন্য এই সূক্ষ্ম ও পিয়ার রিভিউড আর্টিকেলটি পড়া ভীষণ জরুরি। লিংক আমাদের শো নোটে দেওয়া আছে। অবশ্যই পড়া উচিত। তো পেপারের একেবারে গভীরে যাওয়ার আগে যদি খুব সহজ ভাষায় এর মূল কনসেপ্টটা বলি, তবে সেটা হলো অ্যাসিমেট্রিক ইনফরমেশন বা অসম তথ্য। মানে এমন এক পরিস্থিতি যেখানে ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতা পণ্যের মান সম্পর্কে অনেক বেশি জানে। হ্যাঁ, আর এই অসম তথ্যের কারণেই বাজার থেকে ভালো মানের পণ্য চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে। আচ্ছা, একটু ভেঙে আলোচনা করা যাক বিষয়গুলো। অবশ্যই। তথ্যের এই অসামঞ্জস্য কিভাবে কাজ করে তা বুঝতে পেপারসে সেকশন 2 এর উদাহরণটা দেওয়া যেতে পারে। ব্যবহৃত বা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির বাজার, পুরনো গাড়ির বাজার, রাইট? ধরে নেওয়া যাক বাজারে 4 ধরনের গাড়ি আছে, নতুন ও পুরনো এবং ভালো ও খারাপ। আমেরিকায় এই খারাপ গাড়িগুলোকে কথ্য ভাষায় লেমনস বলা হয়। আচ্ছা, লেমনস মানে খারাপ গাড়ি। হ্যাঁ, এখন একজন মানুষ যখন একটি পুরনো গাড়ি কিনতে যান, তিনি তো আর জানেন না গাড়িটি ভালো নাকি খারাপ। তার কাছে শুধু একটা সম্ভাবনার হিসাব থাকে। দাঁড়ান, কিন্তু আমি যদি সত্যি একটা খুব ভালো পুরনো গাড়ি কিনতে চাই, আমি তো বাজার যাচাই করে একটু বেশি দাম দিয়ে হলো ভালো গাড়িটা কিনে নিতে পারি। এখানে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা হলো আপনি বাইরে থেকে দেখে বুঝতে পারবেন না কোনটা ভালো গাড়ি আর কোনটা লেমন। মানে বিক্রেতা গাড়িটা ধুয়ে মুছে চকচকে করে রেখেছে, আপনি বেশি দাম দিতে রাজি আছেন, কিন্তু আপনি তো জানেন না আপনি আসলে ভালো গাড়িটা পাচ্ছেন কিনা। ও, বুঝতে পেরেছি। যদি বেশি দাম দিয়ে খারাপ গাড়িটা আপনার কপালে জোটে, এই প্রতারিত হওয়ার ভয় থেকে ক্রেতা একটা গড়পড়তা দাম দিতে চায়। হ্যাঁ, সেভাবে যেহেতু আমি জানি না গাড়িটা কেমন, তাই আমি খুব বেশি দাম দেব না, আবার একেবারে কমও দেব না, একটা মাঝামাঝি দাম দিই। ব্যাপারটা অনেকটা অনলাইনে কারো কাছ থেকে পুরনো ল্যাপটপ বা ফোন কেনার মতো, তাই না? একদম তাই। দারুণ একটা উপমা দিয়েছেন। মানে বিক্রেতা জানে ল্যাপটপের ব্যাটারি নষ্ট বা ফোনটা কিছুক্ষণ পর পর হ্যাং করে, কিন্তু ক্রেতা শুধু স্ক্রিনে চকচকে ছবি দেখছে, সে তো আর ভেতরের খবর জানে না। রাইট, ভেতরের খবরটা তার অজানা। তাই সে ঝুঁকি এড়াতে দাম কম বলতে থাকে। ঠিক ধরেছেন। এখন ক্রেতা যেহেতু গড় দাম দিতে চাইছে, এর প্রভাবটা কার ওপর পড়বে ভাবুন তো। যে বিক্রেতার কাছে আসলে একটি খুব ভালো গাড়ি আছে, সে তো জানে তার গাড়ির মান কত ভালো। হ্যাঁ, সে কেন ওই গড়পড়তা বা কম দামে তার ভালো গাড়িটি বেচতে চাইবে? সে বিরক্ত হয়ে বাজার ছেড়েই চলে যাবে। একদম। আর ভালো গাড়িগুলো যখনই বাজার থেকে বেরিয়ে যায়, তখন বাজারে আনুপাতিক হারে খারাপ গাড়ি বা লেমনসের সংখ্যা বেড়ে যায়। আচ্ছা, তখন ক্রেতারা কিছুদিন পর বুঝতে পারে যে বাজারে ভালো গাড়ির চেয়ে খারাপ গাড়ি বেশি। তখন তারা দাম আরও কমিয়ে দেয়। হ্যাঁ, আর দাম যখন আরও কমে যায়, তখন মোটামুটি মানের যে গাড়িগুলো ছিল সেগুলোর মালিকরাও বাজার ছেড়ে দেয়। এভাবে একসময় দেখা যাবে বাজারে শুধু খারাপ গাড়ি বা লেমনস রয়ে গেছে। মানে একটা পর্যায়ে গিয়ে ক্রেতার আস্থার অভাবে পুরো বাজারটাই হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ঠিক তাই। অর্থনীতিতে একে গ্র্যাশামস ল-এর একটি মডিফাইড রূপ বলা যায়। গ্র্যাশামস ল-তে বলা হয় খারাপ টাকা ভালো টাকাকে বাজার থেকে তাড়িয়ে দেয়, আর এখানে খারাপ গাড়ি ভালো গাড়িকে বাজার থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। সত্যি তো। মানে কেউ এখানে ইচ্ছে করে বাজার নষ্ট করছে না, ক্রেতাও ঠকতে চায় না, আর ভালো বিক্রেতাও লোকসান করতে চায় না। কিন্তু ওই তথ্যের অভাবটাই সবাইকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করছে। হ্যাঁ, যা শেষ পর্যন্ত সবার জন্যই ক্ষতিকর। আর এখানে সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয়টি হলো এই মডেল কি শুধু গাড়ির বাজারেই আটকে আছে? মোটেও না। মানুষের জীবনের সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গাগুলোতেও এটি কাজে করে। যেমন পেপারের সেকশন 3A-তে উনি স্বাস্থ্য বীমা বা মেডিকেল ইন্স্যুরেন্সের কথা বলেছেন। 65 বছরের বেশি বয়সীদের জন্য প্রাইভেট মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স পাওয়া এত কঠিন কেন? কিন্তু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির তো বিশাল ডেটাবেস আছে। তারা তো বয়স আর সাধারণ স্বাস্থ্যগত পরিসংখ্যান দেখে একটা প্রিমিয়াম ঠিক করতেই পারে। ঝুঁকি বেশি হলে প্রিমিয়াম বেশি নেবে, সমস্যা তো হওয়ার কথা না। সমস্যাটা হলো সেই লুকায়িত তথ্য বা অ্যাসিমেট্রিক ইনফরমেশন। একজন মানুষ তার নিজের শরীরের ভেতরের অবস্থা, তার লুকায়িত রোগ বা ব্যথা সম্পর্কে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির চেয়ে অনেক ভালো জানেন। হ্যাঁ, তা তো বটেই। কোম্পানি যখন একটা গড়পড়তা ঝুঁকি হিসাব করে বয়স্কদের জন্য পলিসির দাম বাড়ায়, তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে।
ওই বয়সের যে মানুষরা অপেক্ষাকৃত সুস্থ তারা হিসাব করে দেখে যে এত টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে ইন্স্যুরেন্স করার কোনো মানে নেই। ও আচ্ছা, তারা তখন পলিসি কেনা বন্ধ করে দেয়। তাহলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির হাতে কারা থেকে যাচ্ছে? শুধু তারাই যারা ভেতর ভেতর জানে যে তারা খুব অসুস্থ এবং তাদের দ্রুতই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। ইন্স্যুরেন্সের ভাষায় একে বলে অ্যাডভান্স সিলেকশন। তার মানে কোম্পানির গ্রাহক তালিকায় শুধু অসুস্থ মানুষ? হ্যাঁ, ফলে তাদের চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে কোম্পানি মারাত্মক লোকসানে পড়ে। লোকসান ঠেকাতে কোম্পানি পরের বছর প্রিমিয়ামের দাম আরও বাড়িয়ে দেয়। আর দাম বাড়ালে বাকি থাকা মোটামুটি সুস্থ মানুষরাও পলিসি বাতিল করে দেবে? ঠিক তাই, একটা ডেথ স্পাইরাল বা ধ্বংসের চক্র শুরু হয়। এভাবে একটা সময় বয়স্কদের এই ইন্স্যুরেন্স বাজার পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। তার মানে মুক্তবাজার ব্যবস্থায় বয়স্কদের চিকিৎসা বীমার কোনো সমাধান নেই? না, কারণ তথ্যের এই অসমতা বাজারটাকে টিকতে দেয় না। আর ঠিক এই কারণেই বয়স্কদের চিকিৎসার জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ কতটা জরুরি তা এই পেপার পরিষ্কার করে। আমেরিকায় বয়স্কদের জন্য যে সরকারি মেডিকেয়ার ব্যবস্থা আছে তার সবচেয়ে বড় যৌক্তিকতা এখানে। অভাবনীয়। মানে একটি সাধারণ গাড়ির বাজারের সমীকরণ কিভাবে রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যনীতির ভিত্তি ব্যাখ্যা করছে। তবে শ্রমবাজার বা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও নাকি এই মডেল কাজ করে? হ্যাঁ, পেপারের সেকশন 3B-তে প্রান্তিক বা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যাপারটা তুলে ধরা হয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় নিয়োগদাতারা নির্দিষ্ট সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বা প্রান্তিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা মানুষদের চাকরিতে নিতে চান না। এটা কি সবসময় শুধু ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা কুসংস্কার থেকে আসে? গবেষণা বলছে সব সময় না। এর পেছনে কাজ করে মুনাফা সর্বোচ্চকরণের চিন্তা এবং তথ্যের অভাব। কারণ নিয়োগদাতা যখন কাউকে চাকরি দেন তিনি প্রার্থীর আসল যোগ্যতা বা মেধা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন না। এটাও তো এক ধরনের অ্যাসিমেট্রিক ইনফরমেশন। প্রার্থী জানে সে কতটা মেধাবী, কিন্তু নিয়োগদাতা তা জানেন না। একদম। তখন নিয়োগদাতা প্রার্থীর যোগ্যতার প্রমাণ খোঁজেন। ভালো স্কুলিং বা মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রার্থীর যোগ্যতার একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ হতে পারত। কিন্তু প্রান্তিক এলাকা বা বস্তির স্কুলগুলোর তো সেরকম কোনো ক্রেডিবিলিটি থাকে না। রাইট। তাই নিয়োগদাতা ঝুঁকি না নিয়ে প্রার্থীর ব্যাকগ্রাউন্ড বা সে কোন এলাকা থেকে এসেছে তাকে একটি মার্কেট স্ট্যাটিস্টিক বা বাজারের পরিসংখ্যান হিসেবে ব্যবহার করেন। তিনি ধরে নেন ওই নির্দিষ্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা প্রার্থীদের গড়পড়তা মান খুব একটা ভালো নয়। কিন্তু এখানে আমার একটা সিরিয়াস প্রশ্ন আছে। তার মানে কি একজন অত্যন্ত মেধাবী ব্যক্তি শুধু তার ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে চাকরি থেকে বাদ পড়ে যাবেন? তার মেধার কি কোনো মূল্য নেই? পেপার ঠিক এই জায়গাতেই সমাজের একটা বড় ব্যর্থতা ধরিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, যেহেতু প্রান্তিক স্কুলগুলোর সার্টিফিকেটের ওপর নিয়োগদাতার আস্থা নেই, তাই ওই সমাজের প্রতিভাবানরাও তাদের মেধার সঠিক মূল্যায়ন পান না। কারণ তারা যে লেমেন বা অযোগ্য নন তা প্রমাণ করার কোনো উপায়ই তাদের কাছে নেই। ঠিক। ফলে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিও শুধুমাত্র পরিসংখ্যানগত অনুমানের শিকার হয়ে বাদ পড়ে যান। আর এর জন্যই প্রাতিষ্ঠানিক হস্তক্ষেপ কতটা জরুরি তা এই পেপার পরিষ্কার করে। এখান থেকেই বিষয়টা আসলেও ভীষণ কৌতূহল উদ্দীপক হয়ে ওঠে। মানে তথ্যের এই অভাব কিভাবে সামষ্টিক অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলছে। আচ্ছা, অসততার অর্থনৈতিক মূল্যটা আসলে কতটা ভয়ঙ্কর? পেপারে সেকশন 3C থেকে বোঝা যায়, আমরা সাধারণত ভাবি অসততার খরচ মানে হলো একজন ক্রেতা ঠকে গেল, কিন্তু ক্ষতিটা এর চেয়ে অনেক বেশি গভীর। কিভাবে? অসৎ ব্যবসায়ীরা যখন বাজারে খারাপ পণ্য বিক্রি শুরু করে তখন তারা শুধু ক্রেতাকেই ঠকায় না, তারা সৎ ব্যবসায়ীদের বাজার থেকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করে দেয়। কারণ ক্রেতারা আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। তাদের মনে হয় সবাই হয়তো লেমন বিক্রি করছে। ঠিক। এটি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এক মারাত্মক সমস্যা। পেপারে সেকশন 3D-তে ভারতের ম্যানেজিং এজেন্সিগুলোর একটা চমৎকার উদাহরণ টানা হয়েছে। হ্যাঁ, সেখানে তো বিনিয়োগকারীরা বাইরের কাউকে সহজে বিশ্বাস করতে পারত না। তারা শুধু নিজেদের জাত বা সম্প্রদায়ের ওপর ভরসা করত। এর কারণ হলো বিকল্প একটা চুক্তি ব্যবস্থা। কেউ টাকা মেরে দিলে তখন আইনের কাছে গিয়ে বিচার পাওয়ার সুযোগ কম ছিল, তাই তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের ভেতরে ব্যবসা করত। কারণ সেখানে একটা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আছে। কেউ টাকা মেরে দিলে তাকে সমাজচ্যুত হতে হবে, তাই তো? একদম। ওই সামাজিক শাস্তির ভয় থেকেই সততা বজায় থাকত। কিন্তু এর ফলে পুঁজি শুধু একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই আটকে থাকত। বৃহত্তর শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত হতো। একটা ব্যাপার খুব প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে। এর সাথে কি গ্রামের মহাজনদের কোনো সম্পর্ক আছে? আমরা দেখি যে গ্রামের মহাজনরা অনেক সময় 50% পর্যন্ত চড়া সুদ নেয়, তারপরেও মানুষ তাদের কাছেই যায়।
হ্যাঁ, আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো ঋণ দিয়ে ধরা খায়। ঠিক, মহাজনরা এত চড়া সুদেও কিভাবে সফলভাবে ব্যবসা করে? এটি তথ্যের অসমতার একেবারে ধ্রুপদী উদাহরণ। একটু ভেবে দেখুন, ব্যাংকের কাছে কোনো ব্যক্তিগত তথ্য নেই। ব্যাংক অন্ধের মতো একটা গড়পড়তা সুদের হার নির্ধারণ করে। ফলে ভালো ঋণ গ্রহীতারা নিরুৎসাহিত হয়, আর যারা ঋণ শোধ করবে না তারা যে কোনো সুদের হারেই ঋণ নিতে আসে। সেই অ্যাডভার্স সিলেকশন। একদম ঠিক। কিন্তু মহাজনের ব্যাপারটা আলাদা। মহাজন সেই গ্রামেই থাকেন। তিনি প্রতিটি মানুষের নারী নক্ষত্র জানেন। তিনি জানেন কার ফসল ভালো হয়েছে আর কে জুয়া খেলে টাকা ওড়াবে। তার কাছে নিখুঁত তথ্য আছে, কোনটি লেমন আর কোনটি ভালো। রাইট। এই ব্যক্তিগত তথ্যের কারণেই মহাজন বুঝতে পারেন কাকে ঋণ দেয়া নিরাপদ। তাহলে এই সব কিছুর মানে কি দাঁড়াচ্ছে? চারদিকে এত অনিশ্চয়তা, তথ্যের এত ব্যবধানের মাঝে প্রতিদিন এত ব্যবসা বাণিজ্য কিভাবে হচ্ছে? বাজার কি নিজের সুরক্ষার কোনো উপায় বের করেছে? যদি আমরা এটিকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের সাথে যুক্ত করি, তবে পেপারের সেকশন 4-এ এর কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সমাধান বা কাউন্টার অ্যাক্টিং ইনস্টিটিউশনের কথা বলা হয়েছে। সবচেয়ে পরিচিত সমাধান হলো গ্যারেন্টি বা ওয়ারেন্টি। তা ক্রেতার ঘাড় থেকে নামিয়ে বিক্রেতার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। ঠিক তাই। বিক্রেতা ওয়ারেন্টি দিয়ে ক্রেতাকে সিগন্যাল দিচ্ছেন যে আমার পণ্যটি লেমন নয়। এতে ক্রেতার মনে আস্থা ফিরে আসে। আরেকটা ব্যাপার হলো ব্র্যান্ড নেম। আমরা কেন অপরিচিত কোম্পানির চেয়ে পরিচিত ব্র্যান্ডের জিনিস বেশি দামে কিনি? কারণ ব্র্যান্ড নেম আসলে একটা জিম্মি বা হোস্টেজ হিসেবে কাজ করে। কোম্পানি তার সুনাম তৈরি করতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে। তারা যদি লেমন গসিয়ে দেয়, তবে সেই সুনাম চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন ধরুন চেইন রেস্টুরেন্টের কথা। হাইওয়েতে অপরিচিত লোকাল রেস্টুরেন্টের বদলে মানুষ কেন ফাস্ট ফুড চেনে খায়? কারণ সেখানে মানের একটা নিশ্চয়তা থাকে। সারপ্রাইজ লেমন পাওয়ার ভয় থাকে না। এছাড়া লাইসেন্সিং বা ডিগ্রির গুরুত্ব অনেক। হ্যাঁ, চিকিৎসক বা আইনজীবীর লাইসেন্স, পিএইচডি ডিগ্রি সবই তো এই সিগন্যালিংয়ের কাজ করে। একটু ভাবলেই বোঝা যায় জর্জ অ্যাকারলফের ওই নোবেল পুরস্কারটাও তো এক প্রকার ব্র্যান্ড নেম বা সার্টিফিকেশন। দারুণ একটা পয়েন্ট হয়েছেন। পেপারের সেকশন 5-এর উপসংহার এটাই যে পুরো অর্থনীতির মূলে রয়েছে ট্রাস্ট বা বিশ্বাস। অলিখিত গ্যারান্টি বা পারস্পরিক বিশ্বাস ছাড়া কোনো বাণিজ্য সম্ভব নয়। হ্যাঁ, বাজারে টিকে থাকতে হলে ক্রেতার সাথে তথ্যের ব্যবধান কমানোর কোনো বিকল্প নেই। একদম তাই। আকারলফের সেই মাঝরাতে ছাত্রদের ক্লাস নেওয়ার মানবিকতা থেকে শুরু করে ব্যবহৃত গাড়ির বাজার হয়ে স্বাস্থ্য বীমা পর্যন্ত সব কিছুর মূলে রয়েছে মানুষ এবং তথ্যের মধ্যকার জটিল এক সম্পর্ক। সত্যি অসাধারণ একটা জার্নি। কিন্তু আজকের আলোচনা শেষ করার আগে যারা শুনছেন তাদের জন্যই একটি নতুন চিন্তার খোরাক রেখে যাওয়া যেতে পারে। আজ আমরা বাস করছি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই আর ডিপফেকের যুগে, যেখানে কোনটা সত্যি আর কোনটা নকল বোঝা মুশকিল। হ্যাঁ, স্ক্রিনে যা দেখছি বা শুনছি তার সত্যতা যাচাই করা দিন দিন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। একটি ভিডিওতে যাকে দেখছি তিনি কি আসলেই সেই মানুষ, নাকি একটি জেনারেটেড কোড? আমরা কি তাহলে তথ্যের অসমতার এক চরম এবং ভয়ঙ্কর যুগে প্রবেশ করছি? এটা একটা দারুণ ভাবনার বিষয়। আগামী দিনের অর্থনীতি, সমাজ বা প্রতিষ্ঠানগুলো এই নতুন ডিজিটাল লেমন্স মার্কেটকে কিভাবে সামলাবে? কিভাবে আমরা আমাদের আস্থার জায়গাটি টিকিয়ে রাখব? এই প্রশ্নটি আজ সবার ভাবনার জন্য রেখে দিলাম। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। एक ऐसी रात सोचिए जब पूरी दुनिया ठहरी हुई थी। कोविड-19 महामारी का दौर था और रात के ठीक 12 बज रहे थे और उस वक्त जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के एक बेहद सीनियर और मशहूर प्रोफेसर ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। रात के 12 बजे? ये सच में हैरानी की बात है, क्योंकि उस उम्र में इतना थका देने वाला शेड्यूल क्यों ही कोई रखेगा। बिल्कुल। और जब उनके एक सहकर्मी जिष्णु दास ने उनसे ये पूछा कि भाई यूनिवर्सिटी ने इतना अजीब समय क्यों रखा है, तो उन प्रोफेसर ने बहुत शांति से जवाब दिया कि क्लास का समय तो दिन का ही है, लेकिन उनके 3 छात्र चाइना में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे। ओह अच्छा, तो उन बच्चों को सुबह 4 बजे तक ना जगना पड़े। हाँ, ठीक वही। ताकि उन्हें ना जगना पड़े इसलिए प्रोफेसर ने खुद अपनी क्लास आधी रात को शिफ्ट कर ली थी। ये कोई आम प्रोफेसर नहीं थे, ये थे नोबेल पुरस्कार विजेता जॉर्ज एडवर्ड एल्कॉन एकरलॉफ। अरे वाह,
मतलब इतनी संवेदना और दूसरों की तकलीफ समझने की ये जो आदत है ना, ये उनकी पूरी जिंदगी और उनकी रिसर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है। देखा जाए तो ये संवेदना उनके बचपन के अनुभवों से आई थी। सही कहा। उनका जन्म 17 जून 1940 को कनेटिकट के न्यू हेवन में एक ऐसे परिवार में हुआ था जो लगातार अलग अलग जगहों पर जाता रहता था। हाँ, क्योंकि उनके पिता की रिसर्च के चलते उन्हें कभी पिट्सबर्ग तो कभी प्रिंसटन के स्कूलों में बार बार बदलाव करना पड़ता था। लेकिन एक चीज जिसने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो थी महामंदी यानी पोस्ट डिप्रेशन और दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर की आर्थिक चिंताएं। यानी बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा ने उनके अंदर एक गहरी जिज्ञासा पैदा की थी। बिल्कुल। फिर 1962 में येल यूनिवर्सिटी से बीए किया और 1966 में MIT से इकोनॉमिक्स में PhD पूरी की, जहां बेहतरीन मेंटर्स ने उन्हें मार्केट फेलियर समझने की तरफ मोड़ा। और पता है, उनकी पर्सनल लाइफ भी उनके इस एकेडमिक जुनून का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है। 1977 की सर्दियों की बात है। फेडरल रिजर्व के कैफेटेरिया में उनकी मुलाकात एक और बेहतरीन अर्थशास्त्री से हुई, जैनेट येलेन। क्या बात है, दोनों की सोच इतनी मिलती थी ना सामाजिक न्याय और बेरोजगारी के मुद्दों पर कि कुछ ही महीनों में उन्होंने शादी कर ली और एक शानदार रिसर्च पार्टनरशिप शुरू की। हाँ, और इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बावजूद उनकी सादगी के किस्से सच में दिल छू लेते हैं। जैसे जिष्णु दास का ही वो एक और किस्सा है ना, प्रीमियम ऑफिस वाला। हाँ, जब यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग में प्रीमियम कॉर्नर ऑफिसेस बन रहे थे जहां से US कैपिटल का नजारा दिखता था, तो एकरलोफ ने अपना नोबेल लॉरिएट होने का कोई रुतबा नहीं दिखाया। हाँ, उन्होंने चुपचाप रूम 778 चुन लिया। इसी नजारे वाला दीवार की तरफ खुलने वाला कमरा था और उनके इस कदम से बाकी सीनियर प्रोफेसर्स के लिए बड़े कमरे मांगना लगभग असंभव हो गया। नतीजा ये निकला कि सारे प्रीमियर कॉर्नर ऑफिसेस खुशी खुशी जूनियर फैकल्टी को मिल गए। ये सच में महानता है। यहाँ तक कि रिटायरमेंट पर भी उन्होंने किसी भी विदाई पार्टी या फेयरवेल से साफ इनकार कर दिया था और दूसरों के कच्चे पक्के आइडियाज को भी घंटों धैर्य से सुनने की जो उनकी आदत थी, उसने उन्हें एक महान शिक्षक बनाया। तो इसी शांत स्वभाव वाले व्यक्ति ने 1970 में एक ऐसा पेपर लिखा जिसने आधुनिक अर्थशास्त्र को पूरी तरह बदल दिया। द मार्केट फॉर लेमन्स, क्वालिटी, अनसर्टेनिटी एंड द मार्केट मैकेनिज्म। ठीक कहा। यह पेपर प्रतिष्ठित FT 50 लिस्ट में शामिल क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स में छपा था और गूगल स्कॉलर पर इसे 50,000 से ज्यादा बार साइट किया जा चुका है। 50,000? ये तो अर्थशास्त्र और मैनेजमेंट रिसर्च का एक एकदम क्लासिक पेपर बन गया है। बिल्कुल। जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि समय निकालकर इस बेहतरीन रिग्रेसली पेयर रिव्यूड आर्टिकल को जरूर पढ़ें। इसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को नए रिसर्चर्स के लिए थोड़ा विस्तार से आसान शब्दों में समझते हैं। ये पेपर एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन यानी जानकारी के असंतुलन के बारे में है। यानी जब बाजार में बेचने वाले को खरीदने वाले से ज्यादा जानकारी होती है। हाँ, लेकिन इस बड़ी आर्थिक थियोरी को समझाने के लिए एकरलॉफ ने एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण लिया पुरानी कारों का, यानी यूज्ड कार्स। अमेरिका में तो कार खराब निकल जाती है उसे लेमन यानी नींबू कहा जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब भी कोई नई कार शोरूम से बाहर निकलती है, हाँ, उसका दाम अचानक गिर जाता है। आम इंसान यही सोचता है कि आखिर एक कार शोरूम से बाहर निकलते ही अपनी आधी कीमत क्यों खो देती है। कार में कोई खराबी नहीं है, इंजन नया है, बॉडी चमचमाती हुई है। यही तो खराबी कार में नहीं, बाजार के नजरिए में आती है। बाजार में दोनों तरह की कारें होती हैं, अच्छी कारें और खराब कारें यानी लेमन्स। लेकिन खरीदार बाहर से देखकर यह तय नहीं कर सकता कि उसके सामने जो कार है वो अच्छी है या खराब। तो उस जानकारी की कमी का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि खरीदार डर जाता है। उसे लगता है कि बेचने वाला उसके साथ धोखा कर सकता है, इसलिए वो उस कार के लिए एक एवरेज यानी औसत कीमत ही देने को तैयार होता है। वो पूरी कीमत कभी नहीं देगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जिस इंसान के पास सच में एक लाजवाब अच्छी कंडीशन वाली कार है, वो उसे उस गिरी हुई औसत कीमत पर क्यों बेचेगा? वो नहीं बेचेगा, वो मार्केट से बाहर निकल जाएगा। और जब अच्छी कारें बाजार से बाहर हो जाती हैं तो बाजार में सिर्फ लेमन्स यानी खराब कारें बचती हैं। एक तरह से ये ग्रिशम के नियम का ही नया रूप है, जहां खराब पैसा अच्छे पैसे को चलन से बाहर कर देता है। यहाँ खराब कार अच्छी कार को बाहर निकाल रही है।
मतलब अंत में पूरा बाजार ही तबाह हो जाता है। यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। अगर ये जानकारी के असंतुलन का सिद्धांत कारों पर लागू होता है तो क्या ये इंसानी जिंदगी और समाज पर भी लागू होता है? बिल्कुल लागू होता है, और इसका असर बहुत गहरा होता है। मेडिकल इंश्योरेंस को ही लीजिए। पेपर में बताया गया है कि 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस मिलने में इतनी परेशानी क्यों होती है? क्यों होती है? क्या इसलिए क्योंकि उनका रिस्क ज्यादा है? हाँ, लेकिन प्रोसेस देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम बढ़ाती है। अब जब प्रीमियम बहुत महंगा हो जाता है तो जो सेहतमंद बुजुर्ग हैं वो सोचते हैं कि इतने पैसे देना बेकार है। ओ, तो सेहतमंद लोग इंश्योरेंस लेना छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, इसे एडवर्स सिलेक्शन कहते हैं। अब कंपनी के पास सिर्फ वही लोग बचे हैं जिन्हें पक्का पता है कि वो बीमार पड़ने वाले हैं और उन्हें इलाज की जरूरत पड़ेगी। इन्हें खुद के बारे में कंपनी से ज्यादा पता है। तो इससे इंश्योरेंस कंपनी का तो नुकसान होता होगा ना? बहुत बड़ा नुकसान। उनके खर्चे बढ़ जाते हैं तो वो प्रीमियम और बढ़ा देते हैं। अंत में वो बुजुर्गों को पॉलिसी देना ही बंद कर देते हैं। बाप रे, ये तो पूरा सिस्टम ही फेल हो गया। लेकिन पेपर में एक और मुद्दा है जो मुझे थोड़ा और संवेदनशील लगा। अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज का रोजगार। एम्प्लॉयर्स अक्सर पिछड़े वर्गों या अल्पसंख्यक समूहों के लोगों को नौकरी देने से कतराते हैं। देखिए, पेपर इसको किसी प्रेजुडिस या पक्षपात से नहीं बल्कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और जानकारी की कमी के नजरिए से समझता है। एक एम्प्लॉयर सामने बैठे उम्मीदवार की असली काबिलियत नहीं देख सकता। उसे नहीं पता उसकी नीयत कैसी है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि अर्थशास्त्र भेदभाव को सही ठहरा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्थशास्त्र भेदभाव को सही नहीं ठहरा रहा। वो ये स्पष्ट कर रहा है कि एम्प्लॉयर सामाजिक बैकग्राउंड या रेस का इस्तेमाल एक स्टैटिस्टिक यानी आंकड़े के तौर पर कर रहा है। क्योंकि उसके पास उम्मीदवार की असली जानकारी नहीं है तो वो बैकग्राउंड देखता है। अच्छा, यानी प्रॉब्लम विश्वसनीय जानकारी की कमी है। जी, ठीक कहा। इसीलिए पेपर कहता है कि अच्छी और विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली होना बहुत जरूरी है। अगर कच्ची बस्तियों यानी स्लम्स के स्कूलों में क्वालिटी नहीं होगी तो वहां से निकले हुए काबिल बच्चों को भी कम्युनिटी के खराब स्टैटिस्टिक का नुकसान उठाना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन होना चाहिए जो व्यक्ति की असली काबिलियत प्रमाणित करे। ये तो सच में सोचने वाली बात है। अगर हम इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें, मतलब अगर ऐसे ही भरोसे की कमी से काबिल लोगों को मौके नहीं मिलेंगे तो एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? विकासशील देशों में व्यापार करना इतना मुश्किल क्यों है? ये उसका सबसे बड़ा कारण है। वहां बेईमानी की कीमत सिर्फ उस एक व्यक्ति को नहीं चुकानी पड़ती जिसके साथ धोखा हुआ है। तो किसको चुकानी पड़ती है? पूरे के पूरे मार्केट को। बेईमानी पूरे वैध व्यापार को ही जड़ से खत्म कर देती है। भारत के ही कुछ खास उदाहरणों पर चर्चा करते हैं जो पेपर में दिए गए हैं, जैसे 1963 का एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एक्ट। ओ हाँ, जहाँ सरकार को क्वालिटी कंट्रोल लाना पड़ा क्योंकि अगर एक ने भी खराब क्वालिटी का सामान बाहर भेजा तो इंटरनेशनल बाजार में पूरे देश का नाम खराब होता। बिल्कुल। और एक और रोजमर्रा का उदाहरण है भारतीय गृहिणियों का चावल से पत्थर बीनना। अरे हाँ, वो पत्थर जानबूझकर मिलाए जाते थे ना? हाँ, क्योंकि खरीदने वाला एक नजर में फर्क नहीं बता सकता। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एक और बड़ा उदाहरण पेपर में मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम का है। भारत में एक दौर था जब व्यापार कुछ खास जातीय समुदायों के आधार पर होता था। अच्छा, जैसे एक ही कम्युनिटी के लोग आपस में ही बिजनेस करते थे। सही। क्योंकि अपने समुदाय के अंदर लोगों के पास एक दूसरे की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती थी। वहां धोखा करना मुश्किल था क्योंकि सामाजिक इज्जत चली जाती, ईमानदारी बनी रहती थी। वाह। और इसी से जुड़ा एक पॉइंट स्थानीय साहूकार यानी लोकल मनी लेंडर का भी तो है। लोग कहते हैं कि साहूकार बैंक से भी ज्यादा ब्याज लेता है, 15 से 50% तक। फिर भी किसान उसी के पास जाता है। बैंक किसान को लोन क्यों नहीं देता? क्योंकि सेंट्रल बैंक या शहर के बैंक के पास किसान के बारे में जानकारी नहीं है। बैंक को नहीं पता कौन पैसे वापस देगा और कौन नहीं, लेकिन स्थानीय साहूकार के पास उसकी पर्सनल नॉलेज होती है। उसे पता है कि किस किसान की फसल खराब हुई है और उसके पास गांव में पैसे निकलवाने की ताकत होती है जो बैंक के पास नहीं होती। ओह, तो असंतुलन ही साहूकार को मोनोपोली देता है। लेकिन अगर हर जगह कार से लेकर बैंक तक एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से बाजार बर्बाद हो रहा है तो फिर ये दुनिया चल कैसे रही है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इस अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी से निपटने के लिए समाज ने कुछ काउंटर एक्टिंग इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं और नियम बनाए हैं। सबसे पहला है गारंटीज। गारंटीज?
जैसे नई कार किफायत मिलती है? बिल्कुल। गारंटी रिस्क को खरीदार से हटाकर बेचने वाले पर डाल देती है। जब पता है कि खराब निकलने पर ठीक करके देंगे तो खरीदार का डर खत्म हो जाता है। दूसरा है ब्रांड नेम्स। जैसे हाईवे पर अगर भूख लगी हो तो हम अनजान लोकल ढाबे के बजाय किसी पहचानी हुई चेन रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि भले ही ढाबा अच्छा हो पर वहाँ क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। चेन रेस्टोरेंट में लोगों को पता होता है कि एक निश्चित क्वालिटी तो मिलेगी ही। ब्रांड नेम यहाँ एक सर्टिफिकेट का काम करता है। और तीसरा तरीका क्या है? पीएचडी डिग्री या नोबेल पुरस्कार भी एक तरह का सर्टिफिकेट है जो क्वालिटी की गारंटी देता है और बाजार को तबाह होने से बचाता है। तो अगर इस सब का हम निष्कर्ष निकालें तो एकेडमिक्स के लिए ये पेपर सिखाता है कि अर्थशास्त्र सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है। ये इंसानी व्यवहार, लोगों के बीच के भरोसे और जानकारी के अभाव से बहुत गहराई से जुड़ा है। और जो लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि उनका ब्रांड और उनकी गारंटी सिर्फ एक मार्केटिंग टूल नहीं है। ये उस बाजार को जिंदा रखने की जीवन रेखा है। इसके बिना मार्केट लेमन बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा। और नए शोध करने वालों के लिए एक दिलचस्प दिशा भी दिखती है यहाँ। क्या आज के डिजिटल युग में यहाँ हर चीज के ऑनलाइन रिव्यूज मौजूद हैं, ये लेमन की समस्या खत्म हो गई है? या फिर क्या फेक रिव्यूज ने एक नए तरह का एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का बाजार खड़ा कर दिया है? ये कंटेम्पररी रिसर्च के लिए सच में एक शानदार विषय है। सही में। और चलते चलते इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरी सोच पर छोड़ते हैं। आज के समय में जब हम अपने बारे में इतना सारा डेटा रोज इंटरनेट पर छोड़ रहे हैं, तो क्या हम खुद जानकारी बन गए हैं? और उस जानकारी का असंतुलन बड़ी कंपनियों के पक्ष में है। तो कोई और इसका फायदा उठाकर हमें ही तो एक लेमन की तरह ट्रीट नहीं चल रहा? एक बहुत ही बड़ा सवाल जिस पर सच में ठहर कर सोचने की जरूरत है। Forestil dig lige, at du går en tur midt under den absolut værste del af covid-19-pandemien. Altså, du holder streng social afstand. Byens gader er fuldstændig tomme og stille. Ja, det var jo en ret surrealistisk tid for alle. Præcis. Og midt i alt det her støder du pludselig på en velkendt kollega. Det var nøjagtigt det, der skete for Jishnu, som er underviser på Georgetown University. Han mødte en af sine ældre, meget respekterede kollegaer på gaden. Og det her var vel at mærke ikke bare en hvem som helst. Nej, det var en absolut legende i den akademiske verden. Men da Jishnu mødte om der, midt under pandemien, så han simpelthen så udmattet og helt grå ud i ansigtet. Ja, og man ville jo naturligvis spørge, om manden var okay. Lige præcis. Og manden indrømmede så helt stille og roligt, at han underviste sine klasser midt om natten. Hold da op. Stort skema. Men det var jo slet ikke universitetet, der krævede det vel? Nej, slet ikke. Manden rettede ham meget blidt. Klassen var faktisk skemalagt til at foregå midt på dagen. Men hans 3 internationale studerende sad fast i lockdown i Kina. Så tidsforskellen var enorm. Ja, og for at de ikke skulle tvinges til at holde sig vågne til klokken 4 om morgenen for at følge med, så havde han simpelthen helt frivilligt valgt at flytte sine egne forelæsninger til midnat. Altså, den historie der, den rummer jo selve nøglen til at forstå den mand, vi skal snakke om i dag. Det gør den nemlig. For han var ikke bare en tilfældig overarbejdende underviser. Det her var en verdensberømt Nobelpristager i økonomi, og hans ekstreme mangel på forfængelighed, den stikker faktisk endnu dybere. Fortæl lige om den episode med bygningerne. Ja, for da seniorfakultetet på Georgetown senere skulle flytte ind i en helt ny, virkelig luksuriøs campusbygning, der var der nogle få ekstremt eftertragtede hjørnekontorer. Vi snakker altså panoramaudsigt direkte til det amerikanske Capitol. Wow, det er jo de kontorer, alle vil have. Præcis. Og med hans massiv status, der kunne han jo bare have peget på det allerstørste af dem og sagt, det er mit. Ja, uden at nogen ville blinke. Netop. Men i stedet valgte han bevidst lokale 7880. Som bare var et helt almindeligt kontor. Det var fuldstændig standard. Et helt anonymt rum med udsigt til en grå mur. Og fordi en intellektuel gigant som ham valgte et så middelmådigt kontor, så blev det pludselig socialt umuligt for de andre seniorprofessorer at være grådige. Det er jo genialt. Ja, de tog bare de andre almindelige kontorer ned ad gangen. Og det betød, at juniorfakultetet, altså de her yngre, helt nye forskere, de arvede lykkeligt alle de bedste hjørnekontorer i hele bygningen. Det siger bare så meget om hans karakter.
Han nægtede vist også at få en afskedsreception, da han gik på pension, ikke? Jo, han nedlagde et meget strengt forbud mod enhver form for formelfejring. Han gled bare helt stille ud af døren. Efterlod sig et enormt intellektuelt aftryk og et minde om utrolig personlig ydmyghed. Manden, vi taler om, er selvfølgelig George Edward Alcorn Akerlof. Og vores mission med samtalen i dag, det er at tage dig, der lytter med, især hvis du måske er helt ny i den akademiske verden og lige står for at skulle starte din egen forskningsrejse. Vi vil tage dig med helt ind i maskinrummet på Akerlofs absolutte mesterværk fra 1974. Ja, papiret, der hedder The Market for Lemons. Lige præcis. Det er en af de mest skelsættende artikler nogensinde. Den er publiceret i det prestigefyldte Quarterly Journal of Economics, som er et FT50-plads tidsskrift, og den er faktisk blevet citeret mere end 50.000 gange ifølge Google Scholar. Det er jo helt uhørt høje tal. Det er et massivt monument inden for både økonomi og ledelsesforskning, og vi har selvfølgelig lagt et link i vores show notes, så vi vil virkelig kraftigt opfordre dig til at afsætte lidt tid til at læse den her meget gennemtænkte og fagfællebedømte artikel selv. Det er virkelig tiden værd. Men inden vi dykker ned i selve teksten, så lad os lige sætte en ramme. Hvis du skal opsummere det for en, der ikke kender til økonomisk jargon, hvad handler det her papir så helt basalt om? Altså, hvis vi skærer al den komplekse matematik væk, så udforsker Akerlof konsekvenserne af det, vi kalder asymmetrisk information. Hvilket betyder? Det betyder helt simpelt, hvad sker der, når en sælger ved meget mere om et produkts sande kvalitet, end køberen gør? Det lyder jo ret simpelt, altså nærmest som en helt uundgåelig del af det at handle, men Akerlof beviste faktisk, at denne her ubalance kan få hele markeder for ellers fremragende produkter til at kollapse fuldstændigt. Det er jo en ret dyster konklusion. Men for at forstå, hvordan han overhovedet begyndte at lede efter de her fejl i den frie markedsøkonomi, så skal vi måske lige kigge på, hvor hans intense empati og den her enorme interesse for social retfærdighed stammer fra. Ja, for han er bestemt ikke vokset op isoleret i et eller andet sterilt laboratorium. Nej. Han blev født den 17. juni 1940 i New Haven i Connecticut. Ind i en meget intellektuel familie, ikke? Jo, meget. Men det var også en ekstremt mobil akademikerfamilie. Hans far var forsker, og det betød simpelthen, at familien konstant måtte rykke talbrillerne op. Han måtte skifte skoler og tilpasse sig nye miljøer igen og igen, fra Pittsburgh til Princeton. Det må have været stressende for et barn. Helt sikkert. Men det, der virkelig formede ham, var selve tidsånden. Han voksede jo op lige efter døningen for depressionen og under 2. verdenskrig. Den der økonomiske frygt og kollektive usikkerhed, den satte sig dybt i ham. Ja, det skabte en livslang nysgerrighed efter at forstå de her ødelæggende sociale konsekvenser ved arbejdsløshed og økonomisk ustabilitet. Han ville simpelthen forstå, hvorfor systemet knuser almindelige menneskers livsgrundlag. Og den nysgerrighed drev ham jo frem. Han tog sin bachelor fra Yale University i 1962, og så videre til Massachusetts Institute of Technology, altså MIT. Hvor han tog sin Ph.D. i 1966. Præcis. Og her var han omgivet af brillante mentorer, der hjalp ham med at fokusere analytisk på markedsfejl. Men det er faktisk her, det bliver rigtig interessant. Og ja, historien fra kantinen. Ja, for hans personlige og akademiske liv smelter fuldstændig sammen her. I efteråret 1977 sad han i kantinen hos den amerikanske centralbank Federal Reserve. Og her mødte han en anden ung økonom, Janet Yellen. Som jo senere blev en gigant i sig selv. Absolut. Og de faldt i snak og fandt lynhurtigt en fælles, brændende passion for social retfærdighed og problemerne med ufrivillig arbejdsløshed. De blev faktisk gift bare få måneder senere. Og de startede jo et fuldstændig legendarisk forskningspartnerskab. Ja, og den der vilje til at lytte, som han viste over for hende og sine studerende, den hænger jo direkte sammen med hans forskningsmetode. Lige præcis. Jishnu, som vi talte om før, fortalte også, at Akerlof havde en helt sjælden tålmodighed for andres ufærdige idéer. Han kunne sidde i timevis og lytte til sine kollegers mest rodet, upolerede tanker. Bare for at hjælpe dem med at tænke klart. Ja, han mødte alle med en enorm værdighed, og den evne til at kigge direkte ind i et uoverskueligt og rodet kaos, og så langsomt trække de røde tråde frem. Det er præcis den samme analytiske hjerne, der gennemskudde de her komplekse markedsstrukturer. Så lad os dykke ned i selve teksten og se, hvordan han brugte det til at revolutionere økonomisk teori, altså det arbejde, der jo gav ham Nobelprisen i 2001. Han bruger en meget specifik case i sektion 2 af sin artikel. Ja, han bruger brugtbilsmarkedet som en slags fingerøvelse. Nemlig. Han opstiller det meget simpelt.
Der er 4 slags biler. Du har nye biler, og du har brugte biler. Og inden for hver af de kategorier er der gode biler, og så er der de dårlige biler, som de i USA kalder for lemons. Altså citroner, fordi man bliver helt sur i ansigtet, når man finder ud af, hvad man har købt. Lige præcis. Og det her, den asymmetriske information kommer ind. Forestil dig, at du køber en kasse chokolade, men det er kun sælgeren, der ved, om halvdelen af stykkerne er fyldt med tandpasta. Haha, det er et forfærdeligt scenarie, men ja. På bilmarkedet betyder det, at sælgeren, der har kørt i bilen i årevis, ved præcis, om det er en fantastisk bil eller en ren lemon. Men køberen kan jo ikke se det. Han ser bare en ny poleret bil. Og det er der, det matematiske kollaps starter. Fordi køberen ikke kan kende forskel på en god bil og en lemon, så er køberen jo rationel nok til at vide, at der er en risiko. Så køberen vil kun betale en gennemsnitspris. Altså en pris, der ligger et sted mellem værdien af en god bil og værdien af en dårlig bil. Netop. For at beskytte sig selv. Men prøv at tænke over, hvad det betyder for den person, der faktisk prøver at sælge en virkelig god bil. Ja, sælgeren af den gode bil bliver jo tilbudt i en pris, der er alt for lav. Præcis. Sælgeren kan ikke få den reelle værdi for sin bil. Og hvad gør sælgeren så? Jamen, så nægter han vel at sælge. Han beholder bilen. Men vent lige. Hvorfor kan sælgeren ikke bare bevise, at bilen er god? Det er et super godt spørgsmål. Men hvordan vil du bevise det uden tvivl? Du kan jo altid påstå, at den kører fantastisk, men det vil ejeren af en lemon også påstå. Det er sandt. Så uden troværdige, uafhængige beviser, så sker der det, at ejerne af de rigtig gode biler simpelthen trækker dem væk fra markedet. Og så er der jo færre gode biler til salg. Ja, gennemsnitskvaliteten af de biler, der er til salg, falder. Det får køberne til at sænke deres tilbud endnu mere, og så forsvinder de næstbedste biler også fra markedet. Det er en decideret dødsspiral. Det er jo en slags moderne udgave af Grishams lov, som han skriver, at de dårlige biler simpelthen driver de gode biler ud. Fuldstændig, indtil der til sidst måske slet ikke er noget marked tilbage overhovedet, selvom der står masser af købere, som gerne vil betale fuld pris for en god bil. Okay, biler er et sjovt og meget illustrativt eksempel. Men i sektion 3 gør han det klart, at det her handler om meget mere. Hvad betyder alt det her for rigtige mennesker? Jamen, han retter blikket mod et af de mest sårbare områder, nemlig medicinsk forsikring for ældre mennesker. Det, man i branchen kalder adverse selection eller ugunstig udvælgelse. Og her bringer han nogle virkelig interessante, konkrete data ind. Han nævner en stor undersøgelse fra 1956 af knap 3.000 familier. Hvad viste den? Den viste, at dækningen af hospitalsudgifter faldt voldsomt, når folk blev ældre. For de 45-54-årige var 63% dækket. Men for dem over 65 år, der var det kun 31%, der havde forsikring. Det er et enormt fald. Og det mest slående er, at for de uforsikrede steg de medicinske udgifter voldsomt med alderen. Men for dem, der faktisk formåede at beholde deres forsikring, der faldt udgifterne pudsigt nok fra $105 til $70. Og det beviser jo lige præcis Akerlofs pointe. Forsikringsselskaberne skubber simpelthen de ældre væk fra markedet. Fordi i takt med, at forsikringspræmien stiger, så er det kun de mennesker, der virkelig ved med sikkerhed, at de er alvorligt syge, der vil betale den høje pris. Ja, de sunde ældre kigger på den høje pris og tænker, det kan ikke betale sig. De trækker sig. Ligesom den gode brugte bil, der bliver trukket fra markedet. Lige præcis. Og så sidder selskabet tilbage med en kundepulje, der er endnu mere syg i gennemsnit. De hæver prisen igen, flere sunde falder fra, og til sidst bryder markedet sammen. Og Akerlofs konklusion på det her er jo et bundsolidt argument for offentlige programmer som Medicare i USA. Fordi et statsligt indgreb, der tvinger alle ind i puljen, faktisk kan betale sig rent samfundsøkonomisk. Ja, han sammenligner det med offentlige veje. Det er noget, vi er nødt til at finansiere i fællesskab, fordi det frie marked ikke kan løse informationsasymmetrien selv. Men han tager den også videre ind på arbejdsmarkedet, og han navigerer ret objektivt et meget følsomt emne, minoriteters vilkår. Ja, det afsnit er virkelig en øjneåbner. Han beskriver, hvordan arbejdsgiver kan ende med at nægte at ansætte minoriteter i ansvarsfulde stillinger, ikke nødvendigvis på grund af en iboende ond fordomsfuldhed, men fordi arbejdsgiveren simpelthen mangler information. Arbejdsgiveren kender ikke den enkelte ansøgers reelle evner, og i mangel på den viden bruger de fejlagtigt race som en slags markedsstatistik til at gætte på kandidatens skolekvalitet eller sociale baggrund. Det leder frem til det der fantastiske citat af økonomen George Stigler, som Akerlof nævner i teksten, at i et regime af uvidenhed ville Enrico Fermi have været gartner og von Neumann kassedrengen i et supermarked. Det er så stærkt formuleret.
2 af de største hjerner i historien ville bare være gået tabt, fordi markedet ikke kunne se deres kvalitet. Hvis de skoler, minoriteterne går på, de såkaldte slum schools fra den tid, er utroværdige som certificerende institutioner, så straffes hele gruppen af denne mangel på asymmetrisk information. Det er en ufattelig høj pris at betale for et samfund. Men vi taler meget om tillid her. Hvad sker der med et helt land, hvis den her tillid slet ikke findes i erhvervslivet? Jamen, der går Akerlof over til at analysere udviklingslande, og prisen for uærlighed er enorm. Han pointerer meget klart, at omkostningen ved uærlighed ikke bare er de penge, en køber bliver snydt for. Nej. Det er tabet af al den legitime forretning, der simpelthen bliver drevet ud af eksistens. Al den handel, der aldrig finder sted. Han bruger nogle utroligt farverige eksempler fra Indien. Han fortæller om indiske husmødre, der må sidde på bazaren og meget møjsommeligt sortere små sten ud af deres ris. Ja, fordi skrupelløse sælgere bevidst har blandet sten i af samme farve for at snyde med vægten. Og køberne ved de jo godt, så de vil kun betale en meget lav pris for risen, hvilket betyder, at den ærlige sælger, der ikke putter sten i, går konkurs. Han nævner også en eksportkontrollov fra 1963 i Indien, der endte med at dække 85% af al eksport. Simpelthen for, at staten måtte tvinge tillid igennem for at beskytte landets omdømme. Men det vildeste er kreditmarkederne. Hvorfor kan lokale pengeudlånere i indiske landsbyer slippe afsted med at tage ordrenter på 15, 25 eller helt op til 50%, når storbankerne i byerne kun tager 6-10%? Ja, hvorfor låner de lokale ikke bare i banken? Ja, og hvorfor går en mellemmand ikke bare ind, låner billigt i banken og udlåner til landsbyerne for 12%? Svaret ligger i personligt kendskab. Pengeudlåneren tjener sine penge på at kende hver en person i landsbyen intimt. Han ved præcis, hvem der betaler tilbage, og hvem der er en lemon. Så hvis en udefrakommende mellemmand prøver at udlåne penge uden den viden, så vil alle de dårlige betalere flokke som ham, og han går direkte konkurs. Han tiltrækker alle de lemons, som den lokale pengeudlåner har afvist. Akerlof viser, at nøjagtigt det samme skete i Iran. Og ja, bommelselskaberne. Ja, de store selskaber, der forsøgte at etablere sig, de forventede simpelthen kalkuleret at lide massive tab på ubetalte lån de første mange år. Udelukkende fordi de manglede kendskab til det lokale miljø. Det er jo vildt at tænke på. Men hvis asymmetrisk information har magten til at smadre bilmarkeder og forhindre ældre i at få lægehjælp og kvæle udviklingslandets økonomier, altså hvorfor er alt så ikke bare brudt sammen? Hvorfor fungerer vores samfund overhovedet? Fordi vi som mennesker er enormt opfindsomme. Akerlof forklarer i sin 4. sektion, at vi heldigvis har skabt en række institutioner, der er til formål at modvirke den her usikkerhed. Han kalder dem counteracting institutions, og jeg elsker de eksempler, han lister op. Den første er garantier. Hvis jeg køber en bil, og der er garanti på. Lige præcis. Men garanti påtager sælgeren sig risikoen for at bevise, at varen ikke er en lemon. Det signalerer stærk kvalitet til køberen, og så kan handlen gennemføres. Og så nævner han varemærker. Brand names. Det giver mig som køber magten til at straffe virksomheden. Hvis Apple eller Nike pludselig begynder at lave elendige produkter, så køber jeg dem bare aldrig igen. Netop. Så de har et gigantisk incitament til at opretholde en stabil kvalitet. Men den tredje ting, han nævner, den er simpelthen så sjov og rammende. Kæderestauranter på motorveje. Hvorfor ligger der altid de her ensformige fastfoodkæder langs de store interurbane motorveje i USA? Ja, det er jo et fantastisk eksempel. Fordi kunderne på en motorvej ikke er lokale. De aner intet om den by, de kører igennem. De ved ikke, om den lille lokale diner er fantastisk, eller om de får madforgiftning. Præcis. Så kæderestauranten tilbyder ikke verdens bedste gourmetmåltid, men den tilbyder en helt fast garanti. Du ved, hvad du får. Den reducerer din risiko for at ramme en decideret lemon. Det er så sandt. Den sidste institution, han nævner, er licensiering. Altså alt fra, at man har en doktorgrad eller en gymnasieeksamen til statslige autorisationer for læger, og som teksten faktisk nævner ret humoristisk, Nobelprisen. Ja, det er jo alle sammen certifikater udstedt af en troværdig tredjepart, som fjerner usikkerheden om kvalitet for køberen eller arbejdsgiveren. Så hvis vi skal samle de vigtigste takeaways fra denne utrolige tekst til dig, der lytter med, så er det jo fundamentalt, at uformelle garantier og tillid er forudsætningen for al produktion og handel. Ja, for teoretikerne viser papiret meget klart,
at kvalitet og pris er fuldstændig uløseligt forbundet. Det skaber simpelthen markedsfejl, hvis man overser det. Og for dig, der måske er praktiker eller iværksætter, enhver form for forretning kræver systemer, der aktivt signalerer troværdighed, som for eksempel certificeringer eller stærke brands. Ellers vil markedet fejle, uanset hvor godt dit produkt er. Det er en utrolig stærk lektion, som stadig er højaktuel i dag. Absolut. Og det åbner jo for nogle enormt nysgerrige spørgsmål om fremtiden. Hvordan ser Lemons marked egentlig ud i dag, midt i den digitale tidsalder? Altså, da internettet kom, troede vi, at online-anmeldelser ville løse alting. Ja, vi troede, at symmetrisk information var fortid. Men løser anmeldelserne problemet, eller har vi i virkeligheden bare skabt et helt nyt, endnu vildere asymmetrisk marked for falske anmeldelser? Det er jo et kæmpe problem, at en lemon nu kan købe sig til at ligne et premiumprodukt. Lige netop. Og hvordan påvirker kunstig intelligens så troværdigheden af al den information, vi forbruger hver eneste dag? Det leder mig egentlig frem til en ret provokerende finaltanke, som du kan tygge på. Lad os høre den. Jamen altså, hvis Akerlof allerede for over 50 år siden beviste, at asymmetrisk information ubønhørligt driver den høje kvalitet ud af markeder for varer og tjenester. Ja. Hvad sker der så lige nu i vores moderne marked for idéer og nyheder på de sociale medier, hvis vi som almindelige brugere og købere ikke længere kan se eller mærke forskel på dybdeborende god information og manipuleret AI-indhold? Fordi det falske jo netop er designet til at ligne det ægte. Lige præcis. Er sandheden så simpelthen ved at blive den ultimative lemon, der lige nu langsomt, men sikkert er ved at blive drevet fuldstændig ud af markedet? Vi vil gerne sige tak, fordi du lyttede med, og vi opfordrer dig som sagt stærkt til at klikke på linket i vores show notes og læse Akerlofs originale mesterværk selv. God læselyst.